गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूँ ऑन पिकिंग अप ए पोटेंशियली ग्रोथ स्टॉक्स। पीछे भी हमने 2-3 वीडियोस बनाए थे जिनमें हमने ग्रोथ स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स या मल्टी बैगर उठाने की कोशिश की थी। आज एक सेम कंसेप्ट पे एक छोटा सा मैं वीडियो बना रहा हूँ। Before we go forward let me be very clear. I'm not a SEBI registered analyst. I'm not a certified financial analyst. I'm just a normal trader like you. I've learned few things in the market and which I am sharing with you. Please do not take it as a buy or a sell recommendation. In case you wish to invest, please do consult your financial advisor prior to doing it. I'm not responsible for any profit and losses you make in the market. It is just a video for an educational idea. I would love that somebody in you all, somebody in you, just improvise it, give us the feedback, and so that we are able to make a better videos, or you can give ideas which we can share with others also. So हम स्टार्ट करेंगे एक स्टैंडर्ड अपना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में कवर करूं बिकॉज देयर आर मेनी ऑफ द फॉलोअर्स हु आर फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया व्हिच and they need they can't understand English, they can't understand Hindi. So for them I will be speaking in English, but there are people up in the north who only understand in Hindi. So every sentence I will try to convert it back into both the languages. मैं इंग्लिश में भी बात करूंगा हमारे साउथ इंडियन भाइयों के लिए, और मैं हिंदी में भी बात करूंगा नॉर्थ इंडियन भाइयों के लिए भी। किसी को अगर मेरी लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम है मैं पहले क्षमा चाहता हूं उसके लिए। We will be using the screener.in. हम screener.in यूज करेंगे। ये एक फ्री साइट है, इस पे कोई भी अकाउंट बना सकता है। अगर आप एक सिंपल इसमें एक यू कैन जस्ट, यहाँ पे ऊपर एक बटन होता है स्क्रीन्स करके, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट, सो इट विल ओपन अप लॉट ऑफ स्क्रीन। ये हमने स्क्रीनर्स निकाल देंगे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। once you click on the button screen, it will open up a window which has a lot of screener into it. You can use any of these screeners for and then trade accordingly. आप इन स्क्रीनर्स में से जो भी आते हैं आप उनको यूज कर सकते हैं एंड आप उसके अकॉर्डिंग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आज का हमारा जो वीडियो है दैट इज टू क्रिएट ए न्यू स्क्रीनर। सो हम यहाँ पे बटन में दबाएंगे क्रिएट न्यू स्क्रीन। हम वीडियो का पहला फंडा ये है, हम पेनी स्टॉक्स को नहीं देख रहे हैं। तो हमने पहला अपना जो रखा है करंट प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 50 रुपीज। हमारा 50 रुपए से ज्यादा का स्टॉक होना चाहिए। हम पेनी स्टॉक्स की तरफ नहीं देख रहे। जब हम इसको रन करते हैं करीब 2909 कंपनीज आते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में ये एक लाइन आ रही जिसमें 2909 स्टॉक्स आ रहे। अब हम इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे सो दैट वी गेट द मैक्सिमम पॉसिबल थिंग। अब हम इसमें कंडीशंस ऐड करेंगे। वी विल बी एडिंग न्यू कंडीशंस इनटू इट। Now the first thing is we are going to use market cap more than 500 crores. जिन कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ज्यादा है हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे। अब हमारा रिजल्ट 1594 हो गया है। 1594, 1400 odd companies have got eliminated from it. अब हम ये चाहते हैं कि उन्हीं कंपनीज में हम इन्वेस्ट करें जिनमें प्रमोटर होल्डिंग ग्रेटर देन 50% है। We are looking for the companies in which the promoter holdings are close to 50% or more than 50%. Now this has decreased to 1161. 1161 is the companies which are left into this. Still too high number for us to invest. So we are going to now put in a kind of more conditions into it so that we are able to get only 4 or 5 companies in which then we will find out the ways to do it. Now फंडामेंटल स्क्रीनर्स में हम बड़ा कॉमन यूज करते हैं ROE एंड ROCE। ये अगर 25 से ऊपर हों तो हम इनको अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मानते हैं।
तो अभी हम पहले करेंगे, हम रिटर्न ऑन इक्विटी हम थोड़ा सा और बढ़ा के करेंगे, 30 कर देंगे। एंड अब हम देखते हैं हमारा कितने स्टॉक्स रह गए। हमारे सिर्फ 152 रह गए। Approximately 1000 stocks have got eliminated by this. अब हम फिर जाते हैं नीचे, अब हम करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी ग्रेटर देन 20 से ऊपर होना चाहिए। हम 30 रख रहे हैं, हम बढ़ा के रख रहे हैं। We are keeping both the return on equity and return on capital employed more than 30%. Now we are left with 113 stocks. Now you can see there are a lot of big stocks coming like life insurance company, LIC, Nestle, K-Solve, Procter and Gamble, Tips Industries, and बहुत सारी आ रही हैं. So we are having too many companies. We cannot invest into all these things. Now we want companies with profit growth more than 30%. कि जिन कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 30% हो रहा है, हम उन्हीं को कंसिडर करेंगे. नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 62 कंपनीज. माइंडेड, अब हम 2900 से शुरू हुए थे, अब हम 62 पे आ गए. We started with 2900 odd companies which were priced above 50 rupees with these parameters. Now it has now come down to, by putting all these parameters one by one, we have decreased it to 62. हम 2900 से 62 तक आ चुके हैं. अभी भी नंबर बहुत ज्यादा है हमारी. अब हम कहते हैं जो प्रॉफिट ग्रोथ in last 3 years should be greater than profit growth of 5 years. मतलब लास्ट 3 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 5 साल से ज्यादा होनी चाहिए. और अब हम इसको रन करते हैं. After we run this with these queries, our results have decreased from 62 to 23. We have narrowed down to only 23 companies, but still the number is high. हम 62 से 62 से हम 23 पे आ गए. अब हम करते हैं ईयर और ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ शुड बी मोर देन 30%. अब हम और स्ट्रिंजेंट करेंगे, हम क्वार्टरली ग्रोथ पे भी आ जाते हैं. We are only reduced to 10 companies. हम 62 से 10 आ गए. Now we have narrowed down, we have decreased the number of companies and we are looking at from 62 to only 10. Now you can see here, we have some companies which are more than close to around 1,000 rupees, 1,500, 1,000 rupees, 6,000 rupees, 6,200, 9,000 rupees. I think so we should avoid companies because many of us may not be able to put in good amount of money into it. मैं बहुत महंगे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं. तो अब मैं ऊपर एक फिल्टर लगा देता हूं अलग से. करंट प्राइस शुड बी लेस देन 500 रुपीज. मैंने इसको बहुत सोच के लगाया दोबारा. अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास 2 स्टॉक्स आ जाते हैं, ग्लोबल एजुकेशंस एंड जीटीएल इंडस्ट्रीज. अब हम इसको इन 2 स्टॉक्स को देखते हैं. इसका लाइफ टाइम हाई करीब 383 तक गया है. इसकी मार्केट कैप 505 करोड़ है. It is paying dividend. It is इसकी face value is 5 rupees. This share has a face value of 5 rupees. Has touched 383 rupees with a low of 157. The sales growth in the last 5 years is 14.5 and ROE for 5 years is 25.7 and ROC is 33.6%. Practically a fundamentally good stock. It's an educational, you can read about it. It was started in 2011 and an education service and a consultancy provider. अगर हम इसको टेक्निकल चार्ट पे देखें, इट इज जस्ट ट्रेडिंग बिटवीन द 50 DMA एंड द 200 DMA. एक जोन होता है जहां से हम यूजुअली कहते हैं रिवर्सल होएगा. अगर आप यहाँ पे भी देखें, जब ये ऐसे बिहेवियर करता है, थोड़ी देर ये साइडवेज रहता है एंड देन इट फायर्स अप. So technically it is showing some signs that it may reverse to its previous level. Stock market में कोई भी 100% नहीं होता. These are games of probabilities.
कंपनीज के लिए प्रोज बहुत ज्यादा हैं, कॉन्स कम है। एंड प्रमोटर होल्डिंग हम लास्ट थोड़ी सी हमारी कम हुई है इस केस में। अगर हम प्रॉफिट देखें तो लास्ट क्वार्टर में इसका प्रॉफिट कम था एज कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ्स का प्रॉफिट इज 50 करोड़ ऑन ए कैपिटल ऑफ 500 करोड़, अराउंड 10% के करीब इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 46% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इज 109%। 1 year stock price CAGR is 60%, and last year the return on equity has been 40%. You will please do read the fundamentals before you invest in any of the stocks. अब दूसरा हमारा है JTL Industries. ये स्टॉक हमारा भी करंट प्राइस 222 के पास चल रहा है। इसकी फेस वैल्यू इज ₹2। This stock, the JTL infrastructure, is now trading at ₹222. This stock is pretty big in market cap, 3,800 crores odd. The face value is ₹2. The profit after tax is 120 CR. The ROE for 5 years is 33.1%. Its lifetime high is ₹278. And you can see ROC is 41.3 crores. The only negative point is it has the free cash flow has decreased by 72.5 crores in the last 5 years. Now, just see what has happened here. After coming down, it has now breached both the 50 DMA and 200 DMA in one shot. And this looks like to be technically a very good stock to invest into. This is my personal suggestion. Please do not take it as a buy or a sell recommendation. अगर हम देखें इसका PE approximately the industry PE के मीडियन के बराबर ही चल रहा है। इंडस्ट्री का 25.31 है, इसका 31.68 है। अगर आप देखें इसका हर क्वार्टर में प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। The profit is going good. And if you see over the trailing 12 months, the profit has really gone up to 168 CR. And the other fundamental parameters looks to be very good in this stock. Both the stocks are looking good for investment. And please do consult your financial advisor before you take the trade. For any feedback, please put a comment in the comment section, or you can put up in the WhatsApp group or the Telegram group, which is given in the bio. This is a free learning and a learning platform. We are not SEBI registered, so please do consult your financial advisor before you take any trade. Thank you, everybody, and good night.